Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories of this week's episode. Contractors protest in illegally occupied Gilgit-Baltistan as budget cuts by Islamabad affects their payment. Three-day Sufi festival held in Srinagar to promote tourism. Sericulture Department organizes an auction market for cocoon producers in Rajouri. And later in a section of Incredible India, we'll take you to witness the ritualistic bath of Lord Jagannath and his siblings in Odisha's Puri. As Islamabad cuts the development budget of illegally occupied Gilgit-Baltistan by half, it is severely affecting almost all the sections of the society. Many are terming it as the worst kind of human rights violation and a tool to disempower the people of the region. Infuriated with this cut in budgetary grant, people from all walks of life have started protesting across the region. Recently, contractors in Gilgit-Baltistan held a demonstration against non-payment due to budget cuts. We have a report. Contractors recently gathered in front of the Chief Secretary's office in Gilgit-Baltistan to protest against the deduction done in the development budget of the region by Islamabad. This budget reduction has impacted a large section of the society as it is not enough to even pay the salaries of the employees. Contractors who are involved in the development work of the region are also a victim of this vicious decision of Islamabad as they are not receiving their payments. At present, they are demonstrating in few numbers, but they have threatened to increase the intensity if their payments are not issued. हमारे मायाटी ठेकेदार बच्चों को फीस नहीं दे सके इस वक्त के में कोई कटौती नहीं हुई है ठेकेदारों में न पंजाब में हुई न सिंध में हुई न बलूचिस्तान में हुई है इस वक्त परेशान हुआ गिलगित बल्तिस्तान के ठेकेदार हैं आज हमारा छोटा सा रियालसल है इंशाअल्लाह ताला कल हम अपनी मशीनरी लेबर अपने बच्चों को लेकर पूरे गिलगित को जाम कर लेंगे. From the previous allocation of ₹47 billion, this time the development budget has almost been cut by 50%, reducing it to mere ₹23 billion. Some say it is the result of the murky political battles between the incumbent authorities in Islamabad, who are led by Pakistan Muslim League Nawaz, and the government of illegally occupied Gilgit-Baltistan, that is led by the ousted Prime Minister Imran Khan's party, PTI. But no matter what the actual reason is, it is taking a toll on the people of the region as they are finding it hard to make their ends meet. ग्रांट के तौर पे चलाने वाले एरिया को 50% जो है वो उसके बजट के ऊपर कट लगा दिया गया. यहां जो भी वज़ीर आला हो, यहां जो भी हुकूमत हो, एक किस्म का बैंक का अमला है. उनके इख्तियारात इतने हैं फाइनेंशियली, बाकी देगर इख्तियारात इक्वल टू तमाम सूबे जरूर होंगे, लेकिन माशी तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर खुद से कोई डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते हैं. जब तक वहां से पैसा नहीं आएगा तब तक जो है यहां हमारे चेक जो है वो बोस होंगे. Many people are of the opinion that this huge deduction in the budget outlay for people of Gilgit-Baltistan comes in line with Pakistan's systematic discrimination towards the people of the region. While they say they have come to terms with Pakistan's decades-long discriminatory attitude towards them, any further decline in the situation is only going to push them towards doom. Well, moving on, while governments around the world are investing in the growth and development of their people, the one in illegally occupied Gilgit-Baltistan cannot even provide the basic amenities. The roads are poor, schools have no teachers, hospitals lack doctors, and above all, people are suffering due to high rates of unemployment and inflation. We have a report. For the last 7 decades, people across illegally occupied Gilgit-Baltistan are leading a life of second-class citizens on their own homeland.
all thanks to Pakistan and its sycophants in Gilgit-Baltistan who are sitting in power. They have not just kept the people deprived of their rights, but also of basic amenities. Almost every district of the occupied territory is dealing with issues of poor roads, lack of proper schools and hospitals, and improper drinking water facility. In the Darel subdivision of Diama district, that has a population of over 80,000, locals are living in the state of despair due to shortage of doctors and teachers, accompanied with dilapidated roads. They are urging government to pay attention to their issues and solve them on an immediate basis. यहाँ दारेल में तो मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा मसाइल हमारा अस्पताल का है। अस्पताल में डॉक्टर अब्दुल करीम साहब की रहलत के बाद अभी तक कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, और जो सीरियस मरीज होता है उनको यहाँ से इलाज लेके जाना पड़ता है। तो हमारी रोड की हालत भी अच्छी नहीं है, और हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि हमारा जो रोड है, सबसे पहले तो अस्पताल, उसको हमारा डॉक्टरों की जो कमी है उनको पूरा किया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारा एजुकेशन पे बहुत से मसाइल है, लेकिन एजुकेशन में जो स्कूल है उनको बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन उनमें असातिज़ा की कमी है। कमी होने की वजह से जो बच्चे हैं यहाँ से नीचे जाते हैं, शहरों को डाउन में जाते हैं। तो हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं और साथ साथ फौज से भी अपील करते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं उनको फौरी हल किया जाए। A sharp uptick in unemployment rate is another big issue with which the entire Gilgit-Baltistan is dealing. It is not just affecting the social standards of the people, but is also pushing the natives to debt and depression. Locals say there is no private sector in the region and government jobs are quite limited, due to which people are either unemployed or are running small businesses. यहाँ पे रोजगार के मौके न होने के बराबर है। यहाँ जो लोगों का दारोमदार है वो सरकारी मुलाजमत पर है। यहाँ इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ यहाँ पे सिरे से मौजूद ही नहीं है, और यहाँ पे जो है सरकारी मुलाजमत भी हर घर में कोई सरकारी मुलाजमत नहीं है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में टोटल मेरे ख्याल में 25% सरकारी मुलाजिम होंगे, उसके अलावा या तो लोग बेरोजगार है या छोटा मोटा कारोबार से अपना गुजारा कर रहे हैं। गिलगित चित्राल रोड बनने जा रहा था, इसका भी ताहाल कोई पता नहीं। अगर ये रोड बन जाता तो शायद टूरिस्ट इस तरफ आ जाते, लोगों को रोजगार के मौके मिल जाते, लेकिन यहाँ पे न तो रोड कोई ठीक हालत में है, न तो यहाँ टूरिज्म पे कोई प्रॉपर काम हो रहा है, न तो यहाँ पे रोजगार के कोई मौके दिए जा रहे हैं। Unprecedented inflation in the region has also taken a toll on people's lives. Be it the food items or petrol, the price of every essential commodity has gone through the roof, making it difficult, especially for the poor, to make ends meet. पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, इसके अलावा डीजल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, बिजली महंगी होने की वजह से यहाँ पे महंगाई जो है वो आसमान पे पहुँच गई है। और लोगों के घरों में सूरत हाल ये है कि इस वक्त लोगों के घरों के चूल्हे बुझते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे टूरिज्म का थोड़ा सा मौके थे, तो इस साल जो है महंगाई की वजह से टूरिस्ट भी इस तरफ नहीं आ रहे हैं। The tourism sector is also in shambles in Gilgit-Baltistan, even though the region is blessed with abundance of natural beauty. If its potential would have been tapped, it could have alone solved several woes of the region. But to its dismay, neither the government nor the authorities are interested in the region's development, turning it into the most neglected and backward region of Southern Asia. Well, next we move on to Jammu and Kashmir, that recently organized a 3-day Sufi festival in Srinagar to promote religious tourism. As a part of the festival, various activities were held that showcased the rich culture and heritage of the Union Territory. Have a look.
From Shaivite masters to Sufi saints, Jammu and Kashmir is well known for being the land of spiritual gurus. It is rightly called as Peer, meaning an abode of Sufis and saints who played a crucial role in knitting the culture called Kashmiriyat. To bring this rich heritage of the territory to light, 3-day Sufi festival was held at Sher-e-Kashmir International Conference Centre in Srinagar. Organized by the Department of Tourism in collaboration with several other departments, the event was attended by a number of dignitaries including professors, lecturers, scholars, writers, poets and students. During the festival, speakers dwelled on the influence of Sufis and saints on the rich heritage of Kashmir. They also emphasized on the need for sharing their legacies with the rest of the world. Students called the festival a great initiative to aware the younger generation of its roots. इनसे हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, मतलब पहले क्या होता था, क्योंकि सूफी जो है एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल है हमारी हिस्ट्री में था पहले, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में. ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, ख़ास तौर पर नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है या हम अभी है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से सूफीज़म के बारे में बताना, लोगों को अवेयर करना कि कैसा है, किस तरह हम हॉस्पिटैलिटी देते हैं लोगों को, क्योंकि बाकी सब मतलब कि छोड़ते हैं और लोगों को कैसे बताते हैं कि हम हॉस्पिटैलिटी की तरफ से कितने अच्छे हैं. As a part of the event, a video presentation on Sufism, namely a journey through mystic Kashmir, was also showed by the tourism department. A mystic gallery was also set up where traditional artifacts, manuscripts and musical instruments were displayed. In addition to it, authorities provided space to artisans who are associated with any Kashmiri art form, thus giving visitors a glimpse of the valley's art and craft. By way of showcasing the rich legacy of the territory, the festival also aimed at giving boost to tourism. We are focusing on एक्सपीरियंशियल टूरिज्म. उसी सिलसिले में आज हम सूफी फेस्टिवल जो है वो मना रहे हैं, जहां वी आर ट्राइंग टू गिव पीपल अ ग्लिम्प्स ऑफ सूफीज़म, आवर श्राइन्स, आवर हेरिटेज, अबाउट आवर ईथॉस, जिसमें आप देख रहे हैं वी हैव सच अ वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ आवर सूफी श्राइन्स एंड टेम्पल्स विद लिटिल नोट्स ऑन व्हाट वी स्टैंड फॉर, व्हाट इट सिग्निफाइज, व्हाट इट मीन्स टू अस एंड व्हाट इट मीन्स टू द वर्ल्ड. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इंटरेस्टेड in this kind of tourism as well, and it is our endeavor that we will try and do everything to see that we have, जिसको हम कहते हैं कि spiritual tourism की तरफ भी हम जोर दें और हर लोग हर तरह से आए. We have several other events lined up. In fact, during this festival we have events in several places all over the Union Territory, in Jammu Division, in Kashmir Division. This is just the beginning and the start, and we will continue to try and improve the experiences that people have. Meanwhile, traditional musical instruments played by the local artists created an enchanting atmosphere at the center. Such initiatives by the J&K authorities to promote the role of saints and Sufis will not just contribute in highlighting the rich heritage of the territory, but will also bring a revolution in its tourism industry.
Jammu and Kashmir has one of the oldest sericulture businesses, which is well known for its quality of silk and traditional silk weaving industries, providing the gainful employment to many households. To facilitate these silk farmers and enable them to sell their cocoon produce at reasonable rates, auction markets are organized every year by the sericulture department. Let's take a look at the recent one organized in Rajouri. Over 2,500 farmers from border areas of Naushera and Sundarbani Tehsil of Rajouri recently sold their produce at the cocoon auction market organized in the district by the Sericulture Development Department. Women farmers too showed an active participation at the auction. Held for over a month, around 94,000 kilograms of cocoon was auctioned, through which farmers earned a total profit of over 2 crore 98 lakh rupees. As the quality of cocoon was much better this year, farmers got good rates for their produce. पिछले साल की बनिस्बत इस साल बहुत अच्छे रेट है, तो क्वालिटी के हिसाब से रेट होता है, तो रेट ओवरऑल अच्छे रेट यानी जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और बॉर्डर के लोग हैं, अच्छे यानी पैसे लिए इस बार लोगों ने, काफ़ी खास करके डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी हेल्प हुई है और इनकम भी अच्छी हुई है इस बार इन लोगों की। हमारे अगर सुंदरबनी और हम शहरा की बात करें तो लगभग 2500 के करीब फार्मर्स जो हैं हमारे मार्केट में अपने क्रॉप लेके आए हैं। जो हमारा हाईएस्ट रेट आया है वो 1650 है और जो एवरेज रेट भी है हमारा यहाँ का वो लगभग 1020 के करीब आ रहा है। तो अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें इस साल के, ये अच्छे रेट मिले हैं और अच्छी इनकम हमारे फार्मर्स ने, जो एक शॉर्ट पीरियड में मोस्टली 1.5 मंथ की बात करते हैं तो उसमें लगभग वो एवरेज जो है वो 1020 रुपये केजी पर कमा रहे हैं कोकोन। और ये इसमें 2000 के करीब मेल्स जो रेरर्स हैं और 500 के करीब हमारे फीमेल्स रेरर भी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और उससे क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा जो डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर है वो इसमें योगदान दे रहा है। Being the only cash crop that gives return within 30 days, sericulture is one of the oldest occupations in Jammu and Kashmir. There are around 33,000 households in 2,800 villages of the territory that are associated with the sector and are generating an income of 2,026 lakh annually. While 1,500 villages are in Kashmir and 1,300 villages are situated in Jammu. Moreover, to give boost to sericulture, 173 nurseries spread over an area of 963 acres and 374 mulberry blocks over an area of 2,215 acres have also been established across the Union Territory. The Sericulture Development Department is also laying all its support to the cocoon farmers in terms of providing seeds, medicines and conducting door-to-door visits to aware them about the latest technological innovations. तो इसमें एक महीने का काम होता है, तकरीबन लोगों को जो कमाने वाला है वो 40 से 50,000, 60,000, 20,000, 30,000 इस तरह अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मतलब कि 28-30 दिन में कमा लेता है। तो इससे ये लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। फिर हम जो डिपार्टमेंट की तरफ से शेडें भी मिलती हैं, वो फिर उनको रेयरिंग किट वगैरह देते हैं, जिससे ये इनका कारोबार एक महीने में जो अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। डोर टू डोर जाके हर तरीके की इनको सुविधा करता है, प्रदान करता है। जो जितना भी ये मेडिसिन है इनको, चाहे ब्लीचिंग है, चाहे सेरिक्लोर है, जो कीड़े के रिलेटिव जो भी दवाइयां हैं इनको फ्री ऑफ कास्ट घर घर जाके देते हैं। With around 4,717 hectare area under mulberry cultivation in Jammu and Kashmir,
sericulture sector holds immense potential in the territory. In the recent past, many women have started playing an active role in cocoon rearing, as it is less laborious as compared to other agriculture activities and could be easily carried out along with other daily chores at home. Moreover, with the efforts of Jammu and Kashmir government and gradual adoption of latest techniques by farmers, the cocoon productivity is increasing year by year. And next we move on to our section of Incredible India, where today we'll take you to the holy city of Puri in Odisha that recently got soaked in the celebrations of Devsnan Purnima. Also known as Snan Yatra, it is the auspicious bathing ceremony of the deities of Jagannath temple that takes place 15 days prior to the world-renowned chariot festival. Have a look. The Puri city of Orissa recently became the center of spirituality as tens of thousands of devotees thronged its holy Jagannath temple to be a part of the annual Snan Yatra. Observed on the full moon day in the month of Jeshta, festival marks the birthday of Lord Jagannath, who is considered as an incarnation of Lord Vishnu. The event takes place on a grand scale and not just witnesses the participation of people from different parts of India, but other countries as well. This feeling is something called prem. It's actually, this is an emotion, but we have to dovetail that. And we can do that by Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, Jagannath is giving Sadhu, and Sadhu is giving Jagannath. And this Harinam Sankirtan that you hear here, this is part of our bhajan actually. This is part of our bhajan, and if we do it nicely, then we can obtain Krishna and Jagannath in this very lifetime. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस दिन पहुंची। कोरोना के बाद तो हम लोग बहुत डर ही गए थे, पता नहीं क्या होगा, फिर हम लोग दर्शन कहीं घूमने निकल पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज इतना खुशी हो रहा है ना कि भगवान के चलते ही हम लोग सब आए दर्शन के लिए, बहुत खुशी हो रहा है। आज के दिन पहुंचे, आज भगवान को बाहर निकाल के स्नान होता है। On this holy day, the idol of Lord Jagannath, his elder brother Balbhadra and sister Subhadra are escorted out of the sanctum sanctorum of the temple to Snan Bedi early in the morning. This procession is called Pahandi. After this, the deities are bathed with 108 pitchers of herbal and aromatic water that is taken from the well present inside the Jagannath temple. Puri King Gajapati is also brought in his royal palanquin to Snan Mandap to conduct the rituals of the festival. Meanwhile, the event is brought alive with the sounds of chanting mantras, dance performances and beats of ghantas, drums, bugles and cymbals. After bathing, the deities are dressed up in Gajanan Vesha or Hathi Vesha, which has a story behind. जो विशेष पर्व होता है उसमें उनका खास श्रृंगार होता है। आज जो हाथी वेश होता है, महाप्रभु को हम उड़िया में कालिया हाथी बोलते हैं। इसका मतलब ब्लैक एलिफेंट, काला हाथी। वो बहुत विशाल बपुधारी महाप्रभु हैं, तो ये हाथी की तरह दिखते हैं। और आज खास तौर पर ये गणपति भट्ट होते थे, मराठा पंडित हुआ करते थे। वो गणपति जी का उपासक हैं। आप जानते हैं मराठी में गणपति का उपासक होते हैं। तो वो आके जब महाप्रभु को दर्शन किए तो वो मन में गणपति का स्मरण किए। तो वो कहे कि मेरे जो इष्ट हैं गणपति जी, ये तो दिखते नहीं मेरे को महाप्रभु में।
तो महाप्रभु गणपति भट्ट का जो मानसिक होता था, जो उनका मन में रहता था, उसका पूर्ण के लिए, मनोकामना पूर्ण के लिए महाप्रभु खुद हाथी का बेस, हाथी का श्रृंगार करते हैं। महाप्रभु काला हाथी और बलभद्र जी धवल हाथी, वो श्वेत हस्ती जिसको बोलते हैं। ये जो ट्रेडिशनल यहाँ पे जो उनके सेवक हैं, कारीगर हैं, वो उनको साल एक महीने भर में बनाते हैं और आज खास तौर पर उसका श्रृंगार किया जाता है। Devasnana Purnima is believed to be one of the oldest and exclusive festivals of Lord Jagannath. Even the rituals performed during the occasion are maintained in the Niladri Mahodaya, a religious text written in Oriya language. As per the Skanda Puran, Raja Indrayuma set this bathing ceremony while he installed the wooden deities in the temple. And even till today, this ceremony has maintained its charm. आज हम जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए आए हैं। ये पूनम का महा स्नान के दर्शन और ये पुण्य का मार्ग होता है, इसमें पाप नाशना, ये धार्मिक उत्सव है। Devasnana Purnima, solely being the celebration of Lord Jagannath, is accepted to be one of the most seasoned celebrations, highlighting the age-old traditions of India. Well, that's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.